नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शामे गाना। मैं हूं माधवी बतूला। आज की तारीख है 5 जून 2020। शाम की 8 बजे हैं। यह a weekly episode of Shame Gana where we bring you an evening of entertainment, 1 hour special where our very talented guest participants give us a pleasurable time. Well, the week has been very, very exciting. A lot of things are happening around. Of course, I'm not going to give you a rundown about what happened around the world, but today's good news. How did that happen? Well, let's see. Unemployment rate surprisingly declines to 13.3%. And of course, what does that do? Dow climbs more than 800 points after May's better than expected job reports. Now, if you have to talk about how did that happen, well, that's a long discussion. Well, this week also brought lots of ups and downs in our lives, and we are hoping that majority of you are doing the well of health and in being. We wanted to congratulate our very talented singers, their birthdays. Of course, SPB ESP Balasubramaniam celebrated his 75th birthday. Ilayaraja, the maestro, celebrated his 77th birthday. And of course, Mani Ratnam Sahab celebrated his 64th birthday. We want to wish them a very, very happy birthday. Well, as I said, there's ups and downs. Our hearts and thoughts are also with all the families who have been affected by the riots across the United States. And from the Hindi film industry, music industry, we had a major loss. We lost our very talented music director, Wajid Khan, and yesterday we lost the very talented director, Basu Chatterjee, to old age. Well, like I said, this is Shame Gana. I'm Madhvi Patula. We have lots in store this evening. We are joined today by Dr. Tushar Patel. A very good evening to him. And of course, our participants, our special guests who are going to entertain this evening are Sunita Kapoor. And should I say she needs no introduction? That itself is a big introduction. When you say that somebody doesn't need introduction, they are so popular, so well known, and of course, their talent speaks for all. She's been a vocal guru, composer, ghazal singer, classical singer, Bollywood music singer, TV host for over 3 decades, and she's lent her voice in numerous films, record labels, TV, radio, theater, and traveled worldwide. And we are so happy and thankful that she took time out today to entertain and, give us that moment of, drift, where we feel that everything is going to be okay soon. She's also joined by her very talented and gorgeous daughters. 2 of her daughters are joined this evening. We will get to know them as we meet them, Prashasti and Palakshi. Let me say a big good evening to all 3 of them, starting with Sunita. Hi, Sunita, how are you this evening? Hi, Madhvi. I'm doing very, very well. And thank you for the very sweet introduction. That was very sweet of you. It's absolute pleasure to be here. Tushar bhai, I know, is a very, very big music lover. थोड़ा बहुत वो भी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं actually. तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो it was absolutely, there was no reason to say no. It's absolutely my pleasure to be here today. Thank you for joining. And लॉकडाउन का समय कैसे बीत रहा है? आप तो संगीत प्रेमी हैं, संगीत आपके साथ है 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पल होंगे जब आप कुछ और भी करती होंगी? करती तो बहुत कुछ हूँ, ज्यादातर तो म्यूजिक ही करती हूँ। म्यूजिक ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। टीचिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, बट खुद का रियाज भी होता है और बहुत कुछ होता है। रियाज तो कभी खत्म ही नहीं होता है, सीखना तो हमेशा जिंदगी भर का होता है। सो वो है। फिर कंपोजिंग करती हूँ। I do like to go for walks and exercise. Well, the gyms are closed right now. तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अब वो कॉलेज से वापस आ गए हैं, छुट्टियां हैं, तो doing that, cooking, stuff like that, and introspection. I think all of us have been introspecting a lot. Introspecting a lot of things have fallen into place. Wonderful. Okay, आपने कहा कि बच्चे कॉलेज से वापस आ गए, तो चलिए आप थोड़ा सा अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन भी दीजिए, प्रशस्ति and Palakshi. What beautiful names they have. Thank you. It was just very simple. Sunita is like the most common name ever. We the 3 sisters, Sunita, Savita, and Sangeeta, and Sarita. So we asked her that, why did you give us such names? And she was like, सब rhyme करते थे और उन दिनों fashion था. So because we had such common names, we thought, so we actually did a lot of research. प्रशस्ति का मतलब है जो रास्ता दिखाती है, Wow. और पलक्षी का मतलब pure. Pure. Wonderful. Of course, let's say good evening to our very own Dr. Tushar Patel. How are you this evening, Dr. Tushar? क्या हाल है, चाल है आपके? Good evening, Madhvi. Thank you so much.
Indus TV and PGA for this wonderful evening, Shame Gana. Madhviji, thank you so much. This is our 10th week actually. And we are so fortunate that Sunita Kapoor, one of the Bollywood singer, is with us this evening with her two talented daughters. So this evening is going to be a super special for me and everyone else who are joined this evening. Absolutely. So, कहिए आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, thank you. जी हाँ, तुषार जी और मैंने दोनों ने समझ लिया है कि इशारा हमारे लिए काफी है कि भाई सुनीता कपूर जी हैं, तो द माइक इज ऑल हर्स. सुनीता जी, आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? कौन से गाने से? क्या गाने के बारे में कुछ बताइए. व्हाट इज योर प्लान दिस इवनिंग? मैं गाना चाह रही हूँ लता जी. वी ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय हर. हम जो भी बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं गाने से, definitely she's an inspiration for all. So Asha ji and Lata ji of course. तो मैं शुरू करना चाहूँगी लता जी का गाया हुआ नगमा कल्याण, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं जी, उनका कंपोज किया हुआ फिल्म शोर. I just love this song very much because when I toured with them, and I've toured a lot with लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, I've been honored to. तो ये गाना मैं वहाँ पे गाती थी और ओपन करती थी अपना जो शो था. So I'd like to talk about, the song talks about life and love and togetherness, and which is what we all need at this point, I think, really a lot. So it goes out to all of you. Please go ahead, the mic is yours. Thank you.
बहुत ही खूबसूरत गाने से शुरुआत हुई है आज की शाम, शामे गाना विद सुनीता कपूर जी एंड हर टू गॉर्जियस डॉटर्स। अभी डॉटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, उनसे मुलाकात थोड़ी ही देर में होगी। इस फिल्म के बारे में खास बात यह है कि इतनी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एवरीबॉडी लव्स टू सिंग दिस सॉन्ग, बट आई हैव हर्ड दिस वर्जन इन द वॉइस ऑफ सुनीता कपूर जी एंड इट इज giving goosebumps because the lyrics are so touching and so too connected to all of us today. And ये गाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड टू मनोज कुमार साहब इन दिस मूवी। सुनीता जी, आपने ये गाने की जो शुरुआत की है, that has given us a glimpse of what a beautiful evening it's gonna be. Please go ahead with your next pick. Thank you, Madhvi. Thank you so much. And अब जैसे सुनने वाले हैं तो और मजा आता है। जो अगला जो नगमा है जो मैंने चूज किया है, is there too much of echo? Sunita ji, people are telling that when you speak, the volume is low. So if you can speak up a little louder, that would be great. Okay, I think because I'm trying to stay away from the mic. Yes, yeah. Oh, is there too much echo now? Can you hear me? No, it's okay. It's okay. Okay. So अगला जो नगमा है, and Asha Bhosle ji, she has been my idol for the longest time, ever since I've actually started hearing music. तो उन्हीं का गाया हुआ नगमा, and मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं because we have 1 hour and बहुत कुछ पेश करना है, तो आशा भोसले जी का गाया नगमा मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरा साथ दें क्लैप करके।
टिक टक टिक टक ऑफ कोर्स द अनमिस्टेकेबल ओपी नायर साहब मेरे सनम फिल्म से गाना पिक किया सुनीता कपूर जी ने। जी हाँ, इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुनीता कपूर नाम ही काफी है। And this is a beautiful evening, Shame Gana. We want to welcome all the people who are just joining us on Zoom as well as on Facebook Live. This is Indus TV's presentation along with PGA. I am joined by Dr. Tushar Patel, Sunita Kapoor and her wonderful daughters. Sunita ji, आपके बारे में और क्या कहें? You sing in so many Indian languages and your masters in Indian classical music. आप इसके बारे में कुछ बताइए. कब से आपने गाना शुरू किया? I mean, when did you feel that, you know, this is what I want to pursue? Well, I've always loved music, and I think मैंने actually पिछले टाइम जब मैंने live एक YouTube live किया था कुछ समय पहले, actually अपने students से हॉल के लिए किया था, so it was a lot of fun. So I just, you know, spoke about that a bit, but it's basically हम लोग इंडिया में जो पैदा हुए हैं, our main source of music was radio. So you know, विविध भारती की विज्ञापन सेवा जो बॉम्बे में होती थी, and विज्ञापन ऐसे में बीच में ads वाले बजते थे, तो that was my first what do you say, inspiration. लता जी, आशा जी, किशोर दा, you know, उनके गाने सुन के बड़े हुए, सारा टाइम रेडियो बजता रहता था, तो गाना गाती थी. And my mom realized, and my parents are doctors, like, you know, medical doctors, तो वो चाहते तो थे कि हम चारों बच्चे जो हैं डॉक्टर्स बने, लेकिन फिर you know, as we grow up, we all get our own interests and stuff. तो मम्मी ने actually teachers लगवाए थे, आते थे जाते थे, और उसी से थोड़ा थोड़ा सीख के कॉलेज में गई, तो I realized that this is what I want to do, because even though I was studying science, intercollegiate competitions में भाग लेना शुरू किया और वहाँ पे prizes जीतना शुरू किया. वहीं से फिर मुझे था कि नहीं, बस गाना सुनती थी तो कुछ हो जाता था, जैसे कुछ अलग सा, कुछ जुनून सा हो जाता था. तो was education and all complete किया, लेकिन फिर भी साथ में विशारद भी किया. And I was lucky. I was noticed by, because I was in Bombay, I was noticed by, you know, Anu Malik and people from the industry, and then I got into the industry because of that. Awesome. तो रेडियो ने जो आपको इंस्पायर किया with all the singers and the music, आपकी बेटियों को आपने इंस्पायर किया. पलक्षी एंड प्रशस्ति से हम तो मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन आप बताइए कि what's the next plan? What are you planning next? I was actually, I mean, I can call them actually, you know, I can call them, and then we can have them sing something, and then we can take it from there. I think we can mix it up a bit. Whatever makes you comfortable. It is the Aurora house today. Right. So, would you be wanting to? Do you want to introduce them? I can call them, and then we'll do one song together, and then after that we'll take it from there. Sure. So, Prashasti and Palakshi, want to come in? Okay. Tushar bhai, I'm not sure if there are some people who are messaging us. They want to be live. They want to go live on Facebook because they're not able to log in to this. So it's already on Facebook Live right now. कहाँ पे है ये? आपके इस पे है? हाँ, I also tagged you as well. Did you just tag me? A few minutes back, 10 minutes back. It says the watch party. Yes, go ahead. Yeah, that's the one. So let's say big hello to Prashasti and Palakshi. They look like twins from this distance. Now I think Mama can help us, or Prashasti and Palakshi can introduce themselves. Hi, Prashasti. Hi, Prashasti. Hi, Palakshi. Okay, आप अपने बारे में बताइए. Let's start with Palakshi. I'm studying in undergrad right now. I've been singing for a while. Got to learn from my mom, so it's really special, and it's something I really enjoy doing. Awesome. And Prashasti, आप अपने बारे में कुछ बताइए? Yeah, absolutely. First of all, thank you so much for having us tonight. It's so amazing, and I know it's a very difficult time for a lot of people to be stuck inside, and you know, this is a really great way to have everybody connected. So my name is Prashasti. I am the older of the two. So yeah, you can notice our difference because I'm slightly taller. But you made your point. Yeah, so I have also been learning from our mom, and we started at the age of 3. And I also went on to study music in high school at a performing arts high school. I also minored in music in undergrad, and I really enjoy singing.
both Indian classical as well as American music, and have been composing some of my own music. That's in English for now. Awesome. We'll get to know more about both of you and of course all the hidden talents too. So Sunita ji, क्या कहते हैं आप? What's next? So मैं उनके साथ actually जब ये छोटे थे तो ये गाना आया था. It was a Shreya Ghoshal song and छोटे-छोटे थे लेकिन इन्होंने सीख लिया था. तो I'm gonna just revive some old memories और हम थोड़ा सा वो गाना गाएंगे. बहुत लंबा है लेकिन आधा करके थोड़ा सा. Sure, go ahead. Mic is yours. Where's the other mic there? It's right under here. Okay. एक पिक्चर आई थी बीच में मॉन्जुली का तो भूल गई तो वही गीत पेश करना चाह रही हूँ. I can't find the track right now. I'm sorry.
मेरे प्यार की धुन मेरी ढूंढ एक बात कहनी थी, हम काफी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी जब भी वो गाती हैं वो शी डजंट वेयर एनी चप्पल्स, वो नंगे पैर गाती हैं बिकॉज वो इतना रिस्पेक्ट करती। और मैं जब भी कोई भी म्यूजिकल प्रोग्राम सुनती हूँ घर से या फिर कोई ऐसी महफिल हो जहाँ कंफर्ट फैक्टर ज्यादा हो, आई प्रेफर सिटिंग ऑन द फ्लोर, यू नो, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि कोई इतना झूमता हुआ गाना जिसमें बहुत कुछ हो, कहीं मैं गिर ना जाऊं, इस डर से मैं नीचे बैठती हूँ। And of course, Bhool Bhulaiya se jo gana aapti, you know, it's a triple whammy here. What a wonderful presentation by the Aroras, Mama, and of course the daughters Prashasti and Palakshi. We are joined by Sunita Kapoor ji, Prashasti Arora, Palakshi Arora, and Dr. Tushar Patel this evening on Sham Ek Gana. Wonderful, wonderful. You want to say something about it, girls? Thank you so much. We love this song so much. We love Shreya Ghoshal ji. She's probably one of the biggest inspirations for anyone who's ever heard her. She instantly becomes an inspiration. So we really, really love this song and all of the songs that she has. It's really all kills it. That's lovely. Sunita Kapoor ji ke saath Sham Ek Gana, and this is just the beginning, friends, and lots in store. Sunita ji, kya kehte hain next? I think since the girls are here, I'll request them to sing a new song since हम थोड़े से नए गाने गा रहे हैं। तो एक medley जो मुझे बहुत पसंद है, actually just as they love Shreya Ghoshal, I think Arijit is another big great, and all the young kids, and actually we love him too. He's a fabulous singer, absolutely. Absolutely. So Arijit Singh का एक medley ये लोग गाते हैं और इन्हें बहुत पसंद है। तो maybe they could do that for the younger crowd. I know I can see some of my younger students there also online. So maybe they could do that, girls? Yeah? Okay. And then if there are any requests, please let us know. मेरे पास तो बहुत गाने हम लोग रात में गा सकते हैं, लेकिन आपका जो request हो, and माधवी जी और तुषार भाई अगर आप देख रहे हैं तो मुझे इतनी दूर से दिख नहीं रहा actually. We'll definitely convey that. Thank you. Just one comment is still there, Sunita ji. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Okay. So if you can adjust your volume a little bit. I will try to come Yes. through. Is this loud enough? No, I think that was okay. Is this good? Yes, perfect. Okay. Closer. You need to take it. Come closer. Yeah. Ready, girls? तेरे बिना
That's just lovely. Prashasti Arora, Palakshi Arora, joined by Sunita Kapoor, their mother here. Sunita ji, आपने इतने सारे concerts किए हैं, and you know, live concert का मजा ही अलग है. As an artist, what is the biggest kick is a live concert. This is a time of lockdown. We don't know what things are going to be, how things are going to turn up, and of course, they're going to go towards the better. So, as an artist, आपको इस वक्त क्या feel हो रहा है? As an artist, हाँ जी. performance wise बहुत मतलब खाली खालीपन लग रहा है. And the reason why हमने live करना शुरू किया है virtually. Actually very lucky actually कि हम कर पा रहे हैं. अगर ये कुछ 10 साल या 15 साल पहले होता तो it would have not been possible. बिल्कुल सही. I think it's really wonderful and I didn't हर कोई ना कोई आप जैसे बहुत अच्छी. I mean it's wonderful. You guys are doing a wonderful job actually. I should have mentioned that before. आप बहुत अच्छा मतलब 10 हफ्ते से आप कर रहे हैं लगातार and you're inspiring people to come and to sit together and to listen to music. ऑडियंस तो है ही लेकिन हम जैसे आर्टिस्ट हैं हमें चाहिए कि ऑडियंस मिले अच्छे सुनने वाले मिले तो थोड़ा सा तो लगता ही है लेकिन because of a platform like yours and other platforms it's wonderful to be able to connect सिर्फ एक चीज हम कर रहे हैं and पूछिए क्या वो जो हम जो बने हैं सीटियां हाँ जी सीटियां and तालियां वो of course सीटियां और तालियां हमें कमेंट्स के द्वारा पता चल जाती है कि वो हमारी सीटियां और तालियां हैं जी हाँ बजाते रहिए तालियां और सीटी बजाते रहिए you know in this entire conversation here what we were trying to also get in is that of course there is so much of negativity around but there are also a lot of positive things that we need to focus on. Technology has been a big boon at a time like this. We have to use the technology in a very positive manner, see that the right message gets across, and we are bringing people together to encourage, motivate them and let them know that this too will pass away and better times are to come. And so taking that forward, I would request Prashasti and Palakshi to take a little break if possible and also read the comments that are coming and accordingly work on some of the technicalities, especially the mic and the volume. And we'll give the mic to Sunita ji. Sunita, please go ahead. Just check on it. Yeah. हाँ जी. Yeah, I can take this mic. That's fine. For all the people who are just joining in, you're watching Shame Gana on Facebook Live and also on Zoom. I'm Madhvi Batula. This evening, I'm joined by the very talented Sunita Kapoor with her daughters Palakshi Arora and Prashasti Arora. And of course, our very own Dr. Tushar Patel. Aapki koi gaane ke suggestions, request ho, to Sunita Kapoor ji is very kind enough to say that she is definitely going to take care of them. Sunita, mic is yours. ओके तो ये जो है मैंने एक्चुअली मेंशन किया था कि कुछ गजल कुछ सूफी खैर उसके लिए तो लाइव म्यूजिक चाहिए होता है उसी में मजा आता है लेकिन एक जो गीत है जगजीत सिंह साहब का and I've had the fortune of actually sharing a stage with him just a wonderful human being and a fabulous singer of course मतलब हम क्या कहें तो जगजीत जी और चित्रा जी का गाया हुआ इनका एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है reminds me of बचपन and बचपन की यादें तो I would like to present this for you. और अगर आपको लगा है कि बहुत कुछ स्लो हो रहा है और आपके लिए तो आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट करें हम कुछ और गा लेंगे लेकिन these are some of my favorite songs. तुषार भाई looks like you want to say something. क्या जानू सजन की फरमाइश आई है जी वो सुनीता कपूर जी गा रही हैं और उस गाने की फरमाइश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये शायद जरूर कोई स्टूडेंट ही होगा मेरे से 5 पहले भी क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम जल उठी सोदी जब लिया तेरा नाम क्या जानू सजन अब ट्रैक नहीं था मेरे पास तो जो भी है आपकी नजर दीजिए और कुछ है और कोई फरमाइश है since I'm at it we'll get to that. I mean you're ready with the next song है ना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी बहुत सारे गाने की रिक्वेस्ट आ रही है हम अगर यहाँ पे थोड़ी सी go ahead
का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छलनों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या याद दिला दिया आपने वो वक्त। सुनीता could definitely relate to what I'm saying. I'm not sure about her daughters, but कभी ना कभी मम्मी ने ये बात तो बताई होगी. From the generation that we come, we've had cassettes where we used to listen to cassettes, and every cassette had two particular movies that would go hand in hand. Example, Rajnigandha and Akhiyon ke Jhonke se एक गाना आता था, हमें पता है उसके बाद कौन सा गाना आने वाला है. निकाह and फाकिजा या फिर उमरा जाओ, ये कॉम्बिनेशन में आता था. उसी तरह ये जब गाना हम जब सुन रहे हैं तो immediately the other song that comes to our mind is चिट्ठी आई है. So I think that goes in sync with both of them. Just a thought of them. So सुनीता जी बताइए कि अगला गाना कौन सा आपने पिक किया है? अगला गाना कुछ क्लासिकल सुनना चाहेंगे? Why not? तो ये जो नगमा है ये एक्चुअली गाया गया है लता जी और रफी साहब का. And मुझे मालूम नहीं है कि it has been sung the last 10 days or not, but this is one of it's classic. It's from the film Swarna Sundari, black and white movie थी, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब. लेकिन गाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन खास गाना है because इस एक ही गीत में 4 अलग-अलग रागों की झलकी पाई जाती है. तो सोनी से शुरू होता है और यहाँ पे एंड करता है. So if you guys are up to it, I will sing this for you. Go ahead, please. ठीक है. ये जरा सा पानी पियो. The audience low still. The audience is all muted. Thank you.
दरिया का शाम शाम मुख झूम लिया हो सकता है मेघराज रे बादरिया का शाम शाम मुख झूम लिया हो चोरी चोरी मन पंछी उड़े नैना जुड़े कुहू कुहू बोले कोयलिया कुहू कुहू बोले कोयलिया कुंज कुंज में खबरें डाले गुनगुन बोले कुहू कुहू बोले जौनपुरी श्रृंगार रस चंद्रिका देख छाई पिया चंद्रिका देख छाई चंदा से मिलके मन ही मन में उसका छाई चंद्रिका देख छाई शरद सुहावन मधुमन वादन शरद सुहावन मधुमन वादन बिरही जनोता सुख सरसावन बिरही जनोता सुख सरसावन छाई छाई पूनम की कथा घूंघट अटा बोले कोयलिया और अंत में जब कमल और कमलिनी का मिलन हो जाता है तो राग गमन हर जगह सुनाई देता है। सरस रात मन भाई प्रियतमा कमल कमल मिले सरस रात मन भाई प्रियतमा कमल कमल मिले सरस रात मन भाई किरण हार दमके जल में चांद चमके मन सानंद आनंद रोने मन सानंद आनंद रोने मदनी सा धनी सा सनी सा धनी सा नी सा धनी मदनी सा नी नी धनी धनी मद मद मदनी सा धनी सा It was a home run, Sunita. This song for me personally, आपने मुझे अपनी family की याद दिला दी, and there were a lot of family members who were involved with this movie. The Telugu version, of course, was Hai Haiga Sagenu. Swarna Sundari first was released in Telugu and then in Tamil and then in Hindi. In fact, Lata Mangeshkar ji had requested that this movie should not be dubbed but should be remade in Hindi. And this is the only movie where Akkineni Nageswar Rao and Anjali Devi acted in Hindi. Beautiful. आप तालियों की बात कर रहे थे. Thank you so much. धन्यवाद धन्यवाद. आप जैसे सुनने वाले मिले और क्या चाहिए मुझे. मजा आ गया. knowledge actually, Madhvi ji, I have not heard this version, and you know जो knowledge है आपकी इस बारे में मैं जानती नहीं थी इस फिल्म के बारे में. So thank you for sharing it. I'm sure the viewers would not have known about this either.
एंड ऑफ कोर्स जब क्लासिक पिक की बात होती है तो क्लासिकल सॉन्ग्स का एक अलग ही पोजीशन होता है, एंड आपने बहुत ही कॉम्बिनेशन में गाना आज में सुनाया. थैंक यू टू एवरीबॉडी हु इज जॉइनिंग इन टू शाम में गाना. दिस इज द 10th वीक ऑफ प्रेजेंटेशन एंड बैक टू बैक. ये हफ्ते ये दिन कैसे बीतते चले जा रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा. बट वी ऑल्सो वांट टू गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर पार्टिसिपेंट्स एंड singers like Sunita Kapoor and her daughters who are here this evening, who've taken time to entertain us. Sunita, what's next on your platter? मैं सोच रही थी, actually, do you guys have time? It looks like time is up right now. Time का क्या है? Time ही time है अब. Sunita ji, we have about 20 minutes. We have 20 minutes, so that's Yes. enough. I had thought it was 1 hour, but I would do a couple of lines requests. I know one of my students from Australia. He's been messaging that please can you sing a couple of lines of the song, so maybe out to you guys in Australia. And कुछ अगर आप कहना चाहें तो मैं 2-4 requests कुछ lines गा सकती हूँ. Sure, So please. the song goes out to the Australians. मैं तो कब से खड़ी इस बार ये अखियाँ थक गई पंथ आजा रे परदेसी. मैं तो कब से खड़ी इस बार की अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी. तुम संग जन्म जन्म की फेरी भूल गए क्यों साजन मेरे. तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे हो आजा रे. मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी. Thank you, Prashasti. ऑस्ट्रेलिया में सब खुशल मंगल हैं. They must be very happy. एक और रिक्वेस्ट है, रोज रोज आंखों तले. ये तो अमित कुमार का गाना. अगली बार. हाँ जी महेश जी, अगली तुझसे बार नाराज, यानी कि तुझसे नाराज भी है. तुझसे नाराज 2 लाइन कर सकते हैं. हाँ जी जरूर. I'm a huge Panchamka fan. Everybody knows that. जीने के लिए सोचा ही नहीं कर्ज उतारने होंगे. जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे. मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं. ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं. ओ परेशान हूँ मैं. ओ परेशान हूँ मैं. जीने के लिए सोचा नहीं था कभी कि जूम सेशन करना पड़ेगा. परेशान तो अब इस वक्त कोई नहीं है, हैरान है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया. और ऐसे शाम हर फ्राइडे 8 बजे here with Indus TV and PGA. I'm Madhvi Batula. This evening we are joined by Dr. Tushar Patel, Sunita Kapoor, and of course her lovely daughters. Sunita, I think the requests are just pouring in. I will leave the platter to you, and you could make a pick as to what you want to sing next. Yeah, I'm gonna have to check the physics. Not see from Prashasti. Do you see anything that you know that I
चले आओ गम का खजाना. Wait. So आप प्रशस्ति और पलक्षी की रिक्वेस्ट पे गाना कर रहे हैं? I think they have picking some songs for you. माधवी जी आपके बारे में पूछना चाह रही थी. आप अपने बारे में 2 लाइन तो बताइए, because I'm sure nobody's interviewed you here. This is the moment you put me on the spot. Huh? We have to know more about you. You speak so beautifully, so you know. Thank you, very kind. Thank you. I will leave it to the end of the session. अभी तो platform आपका है, where people are waiting to listen to you. I will definitely answer that question. Thank you. All right, so I'm going to. Just you find anything? Otherwise, I'll just move on. No. I think we could still do that. Okay, that's fine. Okay. All right. So what I'm going to do is मैं गुजराती में 4 लाइन गाऊंगी, because गुजराती के फरमाइशें थी. Some people have been sending requests for गुजराती गाना. तो it's a very beautiful, मुझे बहुत पसंद है. हम लोग गरबा टाइम में गाते हैं, लेकिन है तो वो पहली. बिना वीर लागे रातड़ी पट चूरी छे मारी आखरी. ओ तारा वीरा वीरा लागे रातड़ी पट चूरी छे मारी आखरी. रे कान्हा हूँ तने चाहूं, हूँ तने चाहूं. जन्म जन्म निभाना हूँ तोरी दासी. जन्म जन्म निभाना हूँ तोरी दासी. हूँ ब्रजबाला तुझो वैकुंठवासी. हूँ ब्रजबाला तुझो वैकुंठवासी. रे कान्हा हूँ तने चाहूं, हूँ तने चाहूं. तारा बिना वीर लागे रातड़ी पट चूरी छे मारी आखरी. रे कान्हा हूँ तने चाहूं, हूँ तने चाहूं. वाह, एक तीर और कई निशाने. इस गाने से आपने सबको तो खुश कर दिया, कान्हा जी ने हमारा दिल जीत लिया, और आपने डॉक्टर तुषार पटेल को इमोशनल कर दिया. Luckily, Sunita ji was part of our ISEF NJ Garba in October 2019. We had privilege to listen to her for almost 4 or 5 hours. So privileged. Thank you. Thank you. It was my pleasure. Absolutely. हम लोग इंडिया में, बॉम्बे में, grew up in Bombay of course, and वहाँ पे जब छोटे थे तो गरबा खेलने जाते थे. रात भर गरबा खेलते थे फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज के साथ में. And then when I started singing professionally, of course, because in Bombay में रह के, the reason why I sang Gujarati was कि Bombay में रह के आप हर language बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, so cosmopolitan. So Gujarati, Marathi, Punjabi, Sindhi, name it, and actually some South Indian languages too. So also entering into the industry, I've had the honor, actually the privilege, because it's so wonderful that you work with so many different music directors, a lot of regional films. So कई गाने गाए अलग अलग लैंग्वेजेस में. तो बहुत अच्छा लगता है जब हम रिकॉर्डिंग करने जाते थे तो लिरिसिस्ट से पूछते थे कि भाई हम ठीक प्रोनाउंस तो कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत जरूरी होता है, तलफ़ुज़ बहुत जरूरी होता है गाने में. तो गुजराती तो है ही, मराठी एक मराठी मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. तो इफ दैट्स ओके विद यू गाइस, आई एम नॉट श्योर, इज दैट ओके? ओके. The language of love is music. Any language is permitted. So right. जीवन राहिली रे दूर घर माझे, पाऊल थकले
माथ्यावरती जड झाले ओझे जीवन 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 लगा मैं भूल गई हूँ गाना तो उसका अंतरा था कुछ अलग सा गिर बोल या बट लंबा है गाना तो ये आशा भोसले जी का गाया हुआ था एंड हम लोग हमेशा ये गाते थे तो दिस गोज आउट टू यू अमृता और तेलुगु Of course, why not? We have Sindhi viewers also requesting for Sindhi song. Telugu or Sindhi ho jaye. చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ ముత్తు ముత్తు ఆశ ముత్యమంత ఆశ జాబిలిని తాకి ముద్దులిడ ఆశ వెన్నెలకు తోడై ఆడుకోను ఆశ చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ जी बस थोड़ा थोड़ा गाऊंगी आई नो समय बहुत कम जी हाँ, चिन्नी चिन्नी आसर सबकी छोटी छोटी आशाएं और पूरी करने की कोशिश कर रही हैं सुनीता यहाँ पर. Of course, let's get to the next song that she has picked. Was it Sindhi? Yeah, Sindhi. Sindhi तो जो बहुत पॉपुलर है वो जो सभी गाते हैं सभी सुनते हैं दमादम. जी ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंदड़ी दा जेवड़दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी जी ओके Wow, क्या बात है. You know, any artist when they're on the stage, and especially when they say that they can sing in multiple languages or they can converse or say a dialogue in different languages, there's always a request for many languages to be, you know, presented there. You had the opportunity to meet so many legends in the industry. What was your fangirl moment that will stay with you forever? fangirl moment was when I was singing. I remember it was in the Oberoi Towers. You know, huge banquet halls में वो लोग वहाँ पे shows होते थे अच्छे से, you know, seats लगा के समझ लो 500-600 लोग private functions but beautiful and उसमें Asha Ji is sitting right in the front and I'm like Asha Ji's biggest fan and everybody knows that, nobody bigger than me. So वो सामने बैठी हुई थी और सुन रही थी और मैंने खैर उनका गाना तो मैंने जरूरत नहीं की कि मैं उनका ही गाना गाऊं, that is just not fun. तो मैंने लता जी का कोई गाना गाया, कोई पुराना गाना, because that was a request. जब नीचे आई तो पहली बार मुलाकात, I must have been in my early 20s और उनसे मुलाकात किसने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सुनीता कपूर है और you know निकाती हैं and stuff. And she was so wonderful. I still remember that white and the printed sari that she had worn and she smiled, dimple smile. And उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा गाया तुमने and you know her voice is so sweet. अगली बार देखना ये म्यूजिशियन है ना, ये बड़े नटखट होते हैं, शैतान होते हैं, कभी कभी बहुत जोर जोर से बजाते हैं, तो जरा चेक कर लिया करो पहले से. So and I was of course I was like you know like a newcomer and you know she करती थी shows लेकिन आशा जी herself और वो मुझे कह रही है कि तुमने अच्छा गाया and I think that's what inspired me कि अगर अच्छा नहीं होता है तो वो कुछ नहीं बोलती because she's known to be like really really blunt. She would be you know not saying. So that was my final moment and I can never ever forget that. Awesome. Seems like Sunita you're hiding something from us because you were definitely a very talented singer. I mean, there's nothing more to add to that, but then to just clap every time that you sing. But आप थोड़ी बहुत mimicry भी कर लेते हैं क्योंकि आपने जब आशा जी के बारे में कहा, उन्होंने जिस तरह से कहा, I felt that you could mimic her also very well.
थोड़ा थोड़ा ये कहते हैं कि all the world's a stage. William Shakespeare का जो pastoral comedy है As You Like It, but you know all of us are characters here and we also have our own time and limitations. तो अगर वक्त की बात करें it's 9:11, so let's ask Sunita what she's planned for the next couple of minutes for us. Next couple of minutes, actually, my girls, please come. We had actually planned to do something upbeat for you guys so that we'll leave you on a high. I was going to do Jab Koi Baat Bigad Jaye because I personally love that song a lot. लेकिन मैं सोच रही थी बच्चों को भी बुला लूं और कुछ upbeat हो जाए. आप लोग अपने अपने घरों में अपने सीट पे उठ के डांस कर सकते हैं, maybe. जरूर. तो no, okay. So I'm going to do one antra of Jab Koi Baat, and then after that we will end in 2 minutes. Just, I think we should do it. This goes out to all you lovely people for sitting and listening and watching. आप घरों में हैं तो आप उठ के ये कर सकते हैं. विशाल भाई, we need to tag somebody else. That's right. जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम मेरा साथ मेरा वो हमनवा. जब कोई बात घड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम मेरा साथ मेरा वो हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा. तुम मेरा साथ मेरा वो हमनवा. तुम मेरा साथ मेरा वो हमनवा. ओ चांदनी जब टकराए देता है हर कोई साथ. तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. ओ चांदनी जब टकराए देता है हर कोई साथ. तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. जब कोई बात कर जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम मेरा साथ मेरा वो हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा. तुम मेरा साथ मेरा वो हमनवा. कोई साथ दे या ना साथ दे, शामे गाना आपके साथ है हर फ्राइडे 8 बजे आज से 9 के कुछ पल तक. जी हाँ, kind presentation of Indus TV and PGA. I am Madhvi Batula and this evening I'm joined by Sunita Kapoor, Prashita and Palakshi and Dr. Tushar Patel also. Before we sign off, of course, we have one final song and the Dhamal, and I promised Sunita ji that I would answer a question कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ. आज तक किसी ने मुझसे सवाल ही नहीं किया. I think she found that out very well. Well, what do I introduce myself? That I'm an artist myself. I've been behind the mic
since the age of 10, and I've been doing debates and primarily been a radio jockey for close to 25 years, a news presenter. I do script writing, direction, and production. And most of the time you will see me on the streets helping people. That's a little introduction about myself. That's so wonderful. Thank you. You've been very kind to ask that question. I really appreciate that, Sunita. Really appreciate that. Thank you. There's so much of work which goes in the back because we work backstage as well, so we know how much goes on. जब तक host अच्छा नहीं हो, program अच्छा हो ही नहीं सकता है. And coming to that very note that you just mentioned, every Friday it's been a little tough for me because I just come in front of the Zoom just about 10-15 minutes before. So how I'm rushing here, I'm not sure. And I'm always telling Dr. Tushar Patel, आज मैं कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, लेकिन कर देंगे किसी ना किसी तरह, और हो जाता है. And 99% of the time, I'm not aware of what the presenter is presenting, because I like to keep the suspense and the surprise to myself too, because every reaction matters to the artist, it comes from the bottom of your heart. So that's where it is, the genuine presentation of Shame Gana, kind presentation of Indus TV and PGA. So Sunita, let's get to the final Dhamal number that you have saved for the last. Yes, so this song is, it's been sung originally by my friends actually, Sonu Nigam, Manishmi Iyer, Alisha Ji. I've worked with her, but she's obviously from the other generation, but all these wonderful people that I know and I've worked with, and fabulous artists. So my girls, we do this on stage sometimes, actually they do it more than me, but I love the song. So I'm going to call them. Let's come. Do you want to say something before you sign off? Thank you for having us. Is it on? Yes, the mic is on. Yeah. Thank you so much for having us. It was really fun just sitting and listening, of course, and hearing you speak about the movies and the knowledge about the songs is really cool, actually. Thank you. You're welcome. We are unable to hear you here. तुषार जी, आपको सुनाई दे रहा है? Track is not playing. Track is not playing here. Thank you.
आज की रात, आज की शाम बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर with Prashasti Arora, Palakshi Arora and Sunita Kapoor. I've had the opportunity to host shows where the crowd has been in thousands, close to 25,000 plus audience होती है. और जब हमने ये शामे गाना concept decide किया था, एक अजीब ही feeling थी जिस तरह से हर artist को होती है कि कैसे हम लोगों को जो आदत है, the feel that we want to hear the singer or the presenter live, experience that little euphoria in the air. I think we've got all that here with all the technology and the support of all the presenters, the artists, Dr. Tushar Patel, Indus TV, PG, and of course everybody who's logged in and watching us live on Facebook and as well as on Zoom. I want to thank each one of you personally for taking out time, encouraging us to do more and bring the best of everybody around us. Thank you. Thank you so much, Madhvi. It's been a pleasure meeting you. Tushar bhai, thank you for inviting us. Thank you. And I'm going to be reiterating what you just said, that इंडिया में जो शोज करते थे उसमें हजारों से कम तो होते ही नहीं थे. कभी कभी कब 5,000 है, कब 10,000 है, कब 15,000 है. Sometimes those open air shows which go on all night, and it used to be just fabulous. That high that you get, you cannot get it with anything in the world. That's, as a musician, as a singer, I can feel that. वो थोड़ा सा missing था, लेकिन seeing all the comments over here, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वो high, definitely, we've been able to get that around. So I want to thank both of you, actually, Tushar bhai for reaching out to me, and Madhvi for being such a wonderful host, and it's just been a pleasure meeting you. And thank you to my audience, my fans, my students, their families. Thank you so much for joining in again, and we love you all. Right? Okay. Dr. Tushar Patel, it's your turn to say something. Thank you so much, Sunita, and both your daughters. Wonderful evening. Thank you, Madhvi, as usual. 10th week in a row. Wonderful job hosting the show. Thank you so much. Shaame Gaana continues next week, again Friday. Until then, stay safe, stay comfortable, and help somebody who's in need. Good night. Thank you. From here. Good night, everyone. Good night.